Put your hands on the heart chakra in Namaste Mudra. Raise it high above the crown to the Supreme God, to the Divine Father, to the Divine Mother. Thank you for your priceless blessings. Thank you. Thank you for the blessings of divine light, divine love, divine guidance, divine love and mercy, inner healing, physical healing, inner strength to continue with spiritual practice, material and financial prosperity, abundance and success, peace and illumination. Thank you. Slightly lower to our beloved teacher, Grandmaster Joaquok Sweet, Lord Mahaguruji Mailing, all the great kid ones, all the holy gurus, holy masters, all the saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, and spiritual elders. We thank you for your priceless blessings. Hands on the ground with lots of gratitude, Rajana with lots of respect, heart with lots of love. I thank you. Silently repeat in your mind, I am not the body, I am not the emotions, I am not the thoughts, I am not the mind. The mind is only a subtle instrument of the soul. I am the soul. I am a spiritual being of divine intelligence, divine love, divine power. I am connected and one with my higher soul. I am connected and one with the divine spark. I am a child of God, connected with God, one with all. I am the soul. Open your eyes with a smile. Atma Namaste. Welcome to the session. Okay, just okay. So first of all, blue triangle. Now, blue triangle, you can do for self means you remove weaknesses, negative pattern, program within you. मास्टर said. मास्टर क्या बोलते हैं कि आप अपने अंदर से नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस, पैटर्न है, प्रोग्राम है, परसिस्टेंटली जो आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको आप निकाल सकते हो. अपनी कमजोरी की ऊर्जा. सो मास्टर सेड, you know, Master said this technique, blue triangle, is like a mini surgery. So Master said, you are asking the help of God, Guruji, and all the great ones, higher beings, all, to disintegrate that weaknesses. So, question, सर हम सबका आह्वान करते हुए अंदर एनर्जी लाते हुए क्लीन करते हैं डिसइंटीग्रेट, देन व्हाई इट इज नेक्स्ट डे वी आर आल्सो फाइंडिंग द सेम एनर्जी, दूसरे दिन भी ऐसा एनर्जी क्यों मिलता है? और द क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी कैन नॉट ओवरकम दोज वीकनेसेस. हम उस वीकनेसेस से बाहर क्यों नहीं आ सकते? क्यों रिपीटेडली करना पड़ेगा? व्हाई वी हैव टू रिपीटेडली रिमूव दोज एनर्जीज? क्यों क्यों? So it is like this. Master said the weaknesses have a layer, like they have layers like onion. Layers like onion. जैसे हमारा प्याज है ना, उसके layers होते हैं ना, एक layer दूसरा layer. So Master said weaknesses also have layers like onion. So once you remove one, you feel like, yeah, then there is a next. So it has a layers like onion. So finally, at one point you will overcome that weakness. Like finally वो आप overcome करोगे. So it takes time. One. Second, it takes also time for our cells to adapt certain new things. हमारे cells को भी time लगता है. So for example, when you remove, let all the energies of injuriousness within me, all the verbal injuriousness or mental injuriousness, you have taken out. So then, still, it's like out, but still it is not totally out, Master said. Why? Because the cells have registered it, brain have registered it. So what happened? Just a minute. So now, for example, suppose, let's say you are driving the car, okay, and sometimes driving the car, the bikers or other car is trying to overtake. Have you experienced you got upset? Yeah.
You didn't get upset. Have you noticed that even after doing blue triangle from that injurious, but still you feel that? Am I right or not? So sometimes we need a conscious effort to change that. See, it's like this. You remove that weaknesses. It's like you remove the, let's say, a mole or a pimple. You remove, but you have to remove from the root. Means what is the cause of the pimple? आपने पिंपल को निकाल दिया, उसका कॉज क्या है, किस वजह से पिंपल हो रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. सो व्हेन यू रिमूव दैट cause, remove the cause. That's the most important thing. To remove the cause. Clear? So it takes some time. It takes some time for our system to adapt. For example, how many of you experience that earlier you are finding difficulty in accepting Grandmaster Chokoksui as a guru? Grandmaster Chokoksui को गुरु की तरह एक्सेप्ट करने के लिए आपको टाइम लगा. You didn't accept easily. I mean, it took time for you. Am I right or no? Right? That is the meaning. Means somebody saying, hey, this is this and good. But you took time. Yourselves, Guru, kapda kaisa hai? How is the outfit? What is doing? He's English speaking. All those things, Am I right or no? So our cells goes through certain process. Then, like affirmation. बार बार अफर्म करके हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं. सो वीकनेस ऑल्सो इज लाइक इफ समबडी टेल्स यू, तुम थोड़ा थोड़ा तुम्हारा जब बात करते हो तो थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा धीरे रखो है, थोड़ा तुम जोर से बात कर दो. मैं कहा जोर से बात करता हूँ. हमने ऑफ एक्सपीरियंस कि किसी ने आपको बोला अरे तुम जोर से बोल रहे हो, एंड से कहा बोल रहा हूँ मैं, ये नॉर्मल तो है हमारा, अभी नॉर्मल बात करता हूँ ना, नॉर्मल है नॉर्मल है, और नॉर्मल है नॉर्मल है नॉर्मल है में तीन तीन बार ऊपर आवाज चला गया. Have you experienced this or no? कितने लोग खुश है देखो. भाई गॉड सर, दुखती नस पे जन्माष्टमी में हाथ लगाया आपने. तो द थिंग इज दैट it takes time for us even to accept that मेरे में प्रॉब्लम है. Am I right or not? प्रॉब्लम और मेरे में. आर यू आउट ऑफ योर माइंड और व्हाट? मैं मेरे ज्योतिष को दिखा है 32 लक्षण है हमारे. So it takes time for each of us to pass through that process, because we always see ourselves from our point of view, our angle. हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एंगल से वो चीजों को देखते हैं, बात करते हैं, इसलिए हमें टाइम लगने वाला है. क्लियर ऑन दिस? Okay, so please create the blue triangle 7 times clockwise. Let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So first you try to remove, the energies which is actually bothering you. It's like as on today, what is bothering you the most? आज आपको जीवन में कौन सी चीज बॉदर ज्यादा करी है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपका कोई प्रोजेक्ट है, so you have anxiety and fear about what will happen. You are anxious about it. Not necessarily anxiety or fear, anxious about it. Or maybe you feel insecurity about it. You feel you keep getting bothered with the thoughts and emotion के बेटी की शादी नहीं हो रही है ना, बेटे का रिश्ता क्या हो जाएगा, ट्रम्प और पुतिन क्या करेंगे, परमाणु बम फूटेगा नहीं फूटेगा, एनीथिंग. दही हांडी में आज फिर मेहमान आएंगे तो क्या करो, क्या खाना बनाओ.
15, 16, 17 ये वीकेंड आ गया ना, थोड़ा टेंशन है हाउसवाइफ को, सबको, सब घर में बनाना पड़ेगा अभी. Anything which is bothering you, is there anything bothering you or no? Certain connected to your house, connected to your family, friend, not friend को भूल जाओ, वो नहीं होगा. Family, daughter, mother का चिंता है कि उसका तबीयत अच्छा नहीं है. You have a concern about your mother's health or father's health. Yes or no? Is it bothering you or no? It bothers everyone, सबको, whether we like it or not. So whatever present, I want you to take out those energies, because because of that, we keep on creating thoughts and emotions. Clear? So that is stress. That can bring stress. which is stress लाती है. So let's say हमने रेगुलर बेस में, लेट्स से द वर्च्यू इज ऑनेस्टी एंड नॉन लाइंग, वी हैव डन. लेट्स से आज हमने एराटिक प्रैक्टिस किया, ऑनेस्टी नॉन लाइंग कर दिया. But the mind is bothered with certain thoughts and emotion. I think we should also do that. हमें वो भी करना चाहिए, because वो thoughts disturb कर रहे हैं. Clear on this? Now these thoughts and emotion. So your honesty is not bothering you right now. Your thoughts and emotion, present thoughts and emotion is bothering you in your business, in your project, everywhere, in your performance, day-to-day life. Clear? Okay, so let's start. Blue, 7 times clockwise. Very good. Left hand touching Ajna, right hand pointing towards the center of the blue triangle. With the help and blessing of God, with the help and blessing of my spiritual teacher, Sadhguru Master Choa Kok Sui, Lord Mahaguruji Mailing, all the great ones, all the holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, and spiritual blessings. I hereby will and decree that all the energies, all negative thoughts, negative emotion, negative feeling, all disturbing thoughts, just recall those disturbing thoughts, particularly connected to house, your family, आपके परिवार के संबंधित, आपके प्रोजेक्ट से संबंधित, आपके घर से संबंधित, any thought, disturbing thought, कोई भी disturbing thought, education of your child, whatever is bothering you in your mind, just recall that all these thoughts and emotions, all these disturbing thoughts and emotions within my entire system be disintegrated completely. ये सारे नकारात्मक विचार और डिस्टर्बिंग थॉट फॉर्म्स जो है, जो मुझे बार बार परेशान करे, वो सर्टन ये सब नष्ट हो जाए, खींच के बाहर आ जाए ब्लू ट्रायंगल के अंदर, अभी के अभी. हिलना मत, एनर्जी फ्रीज, डू नॉट मूव, स्टे देयर. Cut the link, cut. Look at the blue triangle and scan. I am scanning energy inside the blue triangle. Clear? So these are the disturbing thoughts and emotions. Okay. Sacrifice, Supreme God, Solar God. I fully sacrifice to you the contents of the blue triangle. Please accept this offering. Please burn the contents of the blue triangle. Thank you for accepting. Thank you for burning. हे सूर्यदेव, ब्लू ट्रायंगल में जो ऊर्जा है, मैं आपको अर्पण कर रहा हूं, इसका स्वीकार कीजिए और इसको जला दीजिए. इसको स्वीकारने और जलाने बदल आपका खूब खूब आभार. थैंक यू. रीस्कैन. Okay. Ask for the blessing, Lord. Thank you for blessing me with divine light, divine love, divine power. Thank you for your priceless blessing. Thank you for blessing me with right direction in my life. Thank you. Clear? So remember, you need to take out disturbing thoughts, everyday thoughts, emotion, which can be bothering you. Not necessarily related to virtue, because you are bothered about your child's progress, you are bothered about your husband's increment, you are bothered about your own increment, you are bothered about your own health. So it can be disturbing thoughts and emotions, so which is also connected to virtue injuriousness. Are you getting my point? So on daily basis it has to be removed. मेरा लड़का स्कूल जाता है ना, वो लेट होता है ना, मेरा प्रॉब्लम होता है. एक तो कल ही क्राइम पेट्रोल देखा, उसमें किडनैप हुआ ना, तब से मेरे को डर लग रहा है.
So you saw some program and then suddenly you realize, okay, my God, and then how many of you experienced your son and daughter got late from school? As a mother, you really got scared, that day. Have you experienced it? This is very natural, बहुत natural है ये. Clear, clear? So sometimes this pattern has to be out because it is disturbing. Clear? Okay. Next, now we will do it. Certain thoughts and emotions preventing us from, getting the right opportunity, you can say. Now, sometimes it is our own pattern. Sometimes it is our own pattern preventing us to get right job, right business or right clients. कभी कभी हमारे खुद के विचार है, खुद की सोच ऐसी है, खुद का तरीका गलत है, बट हम समझ रहे हैं वो प्रॉपर है. वी आर आवर वे ऑफ वर्किंग टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर बिजनेस is not proper, or it is not what is required as per the present age. Maybe we are following the old pattern. हो सकता है हम ओल्ड पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ओल्ड तरीका अपना रहे हैं, जिससे हमारा ये काम नहीं बन रहा है. Yes or no? Possible? For example, nowadays social media is like an advertising platform. Have you noticed that if you scroll on the Facebook and you will keep getting the advertisement, property or maybe shoes and Amazon and this and that and whatever. Have you experienced this? Now Facebook is free, na? Facebook is free. But can you imagine that they are paying, they are paying for advertisement? Can you imagine if your advertisement is on the Facebook, how many people see them? Think about it. So every time you scroll, it comes in between. Think about it. And Facebook is used by so many people. Think about it. Clear? So Master said, sometimes we think, no, I'm not going to do social media, this and that. It is not my cup of tea. No, then we may lose the business. If we can we become rigid about conducting the session only physical session? Only physical session कर सकते हैं? I think none of you will come to center. Even those who are staying in Mumbai ना, कुछ लोग तो मेरे सेंटर से मतलब आधे किलोमीटर एरिया में रहते हैं. 10 लोग तो मैं जानता हूँ, आधे किलोमीटर एरिया में, हाफ एन आवर, हाफ अ किलोमीटर एरिया रेडियस में, तो भी नहीं आएंगे. Yes, no. So adaptability, no. Let's do on the Zoom. It is one and the same, whether I do physical or this. The people have already run the course. So let's do let's do Zoom. Are you getting my point? This is like adaptability. So I started in year 2015. So my dear friend, just remember, adaptability in the business, thinking about that this cannot be done, this is not right way of marketing, that can also stop you for getting the business. Even your way of working, in the job may not be the right one. For example, TCS is going to eliminate, I think, 12,000 people. 12,000 लोगों को निकालने वाला है TCS. So they said that they are not upgraded one. So they are not upgraded one. So they will be out. See, the the job industry also demands the upgradation. Job industry खुद upgradation demand कर रहा है. So think about it. In the business also we need to have upgradation. Clear on this? So ideas. So any kind of thoughts and emotion and pattern and ideas, thinking that this is not good. Or sometimes, how many of you experience, हम लोग तो छोटे गांव से है ना, हम तो गांव से है, हम तो छोटे शहर से है, हमारा तो टाउन छोटा है, तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं है. How many of you feel that you are from a small town, so you have less opportunity to get the business there? How many of you feel that? Okay. How many of you feel that you are not so good at English, so that's why you are losing
in the business, or you cannot make, or you are not trying, or you may say you are not getting business because you feel like I'm not good at English, so my communication skill is not good, मेरा communication skill अच्छा नहीं है, मेरा English अच्छा नहीं है, तो इसलिए मुझे बिजनेस नहीं मिल रहा है. हमारे गुजराती में एक ऐसे डायलॉग बोलते, बापानी टांग ना, मराठी में बोलते हो नानाची टांग. सो यू अंडरस्टैंड द डायलॉग मीनिंग, डायलॉग जो है ना उसके पीछे का भावार्थ समझ गए कि मेरा बोलने का बापानी टांग. अरे इंग्लिश नहीं आता है क्या? इंग्लिश इंग्लिश बिजनेस लाता है. डस इंग्लिश लैंग्वेज ब्रिंग द बिजनेस? दैट इज द रॉन्ग थिंकिंग कि मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है इसलिए मुझे बिजनेस नहीं मिल रहा है. दैट इज अ रॉन्ग थिंकिंग कि मैं छोटे से टाउन को बिलोंग करता हूँ इसलिए मेरा बिजनेस नहीं मिल रहा है. जब आपने किसी से हीलिंग लिया था, व्हेन यू हैव टेकन हीलिंग फ्रॉम समबडी, डिड यू आस्क, हे हाउ गुड आर यू एट इंग्लिश, इज योर इंग्लिश नाइस? नहीं पूछा था किसी ने तुम्हारा इंग्लिश कितना कैसा अच्छा है? नहीं पूछा था. तो फिर किसी ने पूछा था शालीन सर को क्लास में आते हुए, तुम्हारा इंग्लिश बराबर है ना, ये कॉन्वेंट में पढ़ा है ना आप सर, हाँ बराबर आता है ना, प्रोनाउंसिएशन बराबर है ना तुम्हारा? किसी ने पूछा किसी को? नहीं, ये दिमाग में है कि मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है. तेल पीने जाए, लैंग्वेज आपको समझ में आ गया मैं बोल रहा हूँ? कैन यू अंडरस्टैंड? फॉर दैट्स इट. हु केयर्स? किसको लेना देना है इंग्लिश लैंग्वेज? ये हमारा कम्युनिकेशन का है, जरिया है कम्युनिकेशन का. सो आप सोचो भी मत, यू डोंट इवन थिंक दैट बिकॉज आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश आई एम कैन नॉट डू बिजनेस, और आई एम फ्रॉम स्मॉल टाउन. अरे शिरडी जैसे एरिया में नाइकी का शोरूम और रिबोक का शोरूम आज से मैंने 10 साल पहले देखा था, उससे भी ज्यादा होगा मेरे ख्याल से. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट वाज 2010 और 9 और 11, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. मेरे ख्याल से सचिन तेंदुलकर ने जब साउथ अफ्रीका के सामने 200 रन स्कोर किया था ना वनडे में, मैं देख के बता दूंगा. उस दिन मैं शिरडी में था. आई जस्ट लैंडेड. आई केम टू नो बिकॉज आई वेंट टू दैट. हाँ कहाँ पर? शिरडी में काफे काफी डे. हेलो, 15 साल पहले का बात कर रहा हूँ. काफे काफी डे और बाजू में नाइकी का शोरूम और ये रिबोक का शोरूम. शिरडी में कौन नाइकी का शोरूम पे रिबोक कौन पहनेगा? आज से 15 साल पहले. अभी भी शोरूम है शिरडी में. गांव रे, अच्छा. देखो उधर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज द बैरियर. ये प्रोग्राम पैटर्न ये टूटना चाहिए, ये टूटना चाहिए. बिकॉज दैट इज स्टॉपिंग अस टू डू सर्टन थिंग. कभी कभी हम वो सोचते हैं ना, इसीलिए हम वो करते नहीं है. हम कर नहीं पाते हैं कि नहीं नहीं, हम पहले से सोच लेते नहीं होगा नहीं होगा. ये हमारी खुद की सोच हमें रोक रही है. our own thoughts that no it is not possible is preventing us to get that progress. Clear? Let's remove that. Left hand touching ajna, right hand pointing towards the center of the blue triangle with the help and blessing of God, with the help and blessing of my spiritual teacher Sadguru Master Joa Koksu, Lord Mahaguruji Meri, all the great ones, all the holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, and spiritual blessings. I hereby will and decree that any kind of negative thoughts, negative emotions, negative feelings, and pattern and program within me, preventing me to attract lots of right paid clients in my business, preventing me to becoming successful in my job or in my career. कोई भी प्रकार के नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक थिंकिंग पैटर्न और प्रोग्राम जो मुझे अपने बिजनेस में सफलता, संपत्ति, समृद्धि प्राप्त करने में बाधा रूप है, मुझे सफलता, संपत्ति और समृद्धि मेरे करियर में प्राप्त करने में बाधा रूप है. मेरे कोई भी प्रकार की सोच, मेरे कोई भी प्रकार का गलत तरीका, ये संपूर्ण रूप से नष्ट होके खींच के बाहर आ जाए इस ब्लू ट्रायंगल के अंदर अभी के अभी. Let all these tendencies and weaknesses within me be disintegrated completely, get extracted completely, get externalized and concretized into the blue triangle now, now, now. Energy freeze, do not move. Cut the link, cut, cut, cut. Okay, look at the blue triangle and scan. I am scanning energy inside the blue triangle.
Did you find it? Yes? Okay, sacrifice. Supreme God, Solar God, I fully sacrifice you the contents of the blue triangle. Please accept this offering. Please burn the contents of the blue triangle. Thank you for accepting. Thank you for burning. हे सूर्यदेव, ब्लू ट्रायंगल में जो ऊर्जा है मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, इसका स्वीकार कीजिए और इसको जला दीजिए. इसको स्वीकारने और जलाने बदल आपका खूब खूब Let's ask for the blessing, Lord. Thank you for blessing me with divine light, divine love, and divine power. Thank you for blessing me with right direction, right thinking for my career and business. Thank you. Open your eyes. Okay. Just a moment. We need a light. Okay. Next. Now, this is within us. This is within us. Now, how you can remove negative energy within the house? How you can remove negative energies within your workplace? How you can remove that? How you can remove the negative energies within the project? Okay. So how you can do? So it is like this. You project blue triangle, I mean blue, you create blue triangle, but instead of doing like this, why we are doing this? हम ये क्यों करते हैं action? So here we activate our Ajna Chakra, will, and here we are taking out negative energy ना. Blue triangle जब हम करते हैं, shoot करते हैं, तो हम blue triangle में हमारे अंदर की energy को निकाल रहे हैं. That's why we are doing like this and pointing towards a blue triangle. But what about if you want to remove negative energy within the house or business premise or project? अगर घर में से, काम के जगह से या प्रोजेक्ट से नेगेटिव एनर्जी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? डू यू नीड टू डू दिस? क्या आपको ये करना चाहिए? द आंसर इज नो. देन इट विल पास थ्रू यू ना, तो फिर आपसे पास होगा. सो हाउ यू डू? You simply do the prayer. That's it. आपको हाथ ऐसे ही नॉर्मली रखना है. मीन्स यू आर जस्ट डूइंग प्रेयर लाइक दिस, बट यू आर इंटेंडिंग, आप इंटेंड कर रहे हो. सो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू. डोंट डू इट राइट नाउ. अभी अभी मत करना. डू नॉट डू दिस राइट नाउ. फर्स्ट लिसन टू मी फर्स्ट, देन यू प्रैक्टिस. वी विल प्रैक्टिस टुगेदर. साथ में प्रैक्टिस करेंगे, अभी कोई नहीं करेगा. सो वी प्रे with the help and blessing of God, with the help and blessing of my spiritual teacher, Sadhguru Master Chua Koksui, Lord Mahaguruji Mailing, all the great ones, all the holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual advisors, and spiritual elders blessing. I hereby will and decree that any kind of negative thoughts, negative emotions within my house, all negative thoughts, negative emotions, psychic energies, obstructing energies, all this within my house be disintegrated completely, get extracted completely, get externalized into this blue triangle. So you are just putting intention. ये सारी दूषित ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक भावनाएं, विचार, साइकिक एनर्जी मेरे पूरे घर से नष्ट होकर खींचकर इस ब्लू ट्रायंगल में आ जाए. सो यू आर नॉट पॉइंटिंग लाइक दिस. आप ऐसा नहीं कर रहे हो. यू आर जस्ट इंटेंडिंग दैट दिस एनर्जी कम्स इन द ब्लू ट्रायंगल. क्लियर ऑन दिस? हेलो, सब लोग जाग रहे हैं. सो शैल वी डू इट? यस. और पीछे अभी भी छुप छुप के जो 98 में से 40 लोग स्क्रीन पे, बाकी लोग अभी आप लोग चाय पिया हो गया तो आप लोग ब्लू ट्रायंगल करने वाले हो भाई साहब, आप बहनों और भाइयों? क्या मुझे देख के ब्लू ट्रायंगल मत करना. क्लियर? थैंक यू. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट प्रोजेक्ट ब्लू प्राणी करना जी. ब्लू 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 ब्लू. ओके. प्रे. You can put your hands on your lap या हार्ट चक्र, कहीं पर भी रख सकते हो. You can put your hands on the heart chakra or on your lap facing upward like that. Okay. So say, with the help and blessing of God, with the help and blessing of my spiritual teacher, Sadhguru Master Chua Koksui, Lord Mahaguruji Mele, all the great ones, all the holy gurus, holy masters, all the saints, archangels, holy angels, spiritual advisors, and spiritual elders blessing. I hereby will and decree that any kind of negative thoughts, negative emotions, negative feelings, negative pattern, program, psychic energies within my entire house be disintegrated completely.
get extracted completely, get externalized and concretized into this blue triangle. Now, मेरे घर से कोई भी प्रकार के नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक थिंकिंग पैटर्न, प्रोग्राम और कोई भी प्रकार की साइकिक ऊर्जा संपूर्ण रूप से नष्ट होकर खींचकर इस ब्लू ट्रायंगल में आ जाए अभी के अभी। हिलना मत, एनर्जी फ्रीज, डू नॉट मूव, स्टे देयर। Cut the link. Cut. Look at the blue triangle and scan. I am scanning energy inside the blue triangle. Blue triangle में जो ऊर्जा मैं scan. Sacrifice. Supreme God, Solar God. I fully sacrifice to you the contents of the blue triangle. Please accept this offering. Please burn the contents of the blue triangle. Thank you for accepting. Thank you for burning. हे सूर्य देव, ब्लू ट्रायंगल में जो ऊर्जा है मैं आपको अर्पण कर रहा हूं, इसका स्वीकार कीजिए और इसको जला दीजिए। इसको स्वीकारने और जलाने बदल आपका खूब खूब आभार। थैंक यू। पुट योर हैंड्स डाउन, हाथ नीचे रख दो। रीस्कैन। आई एम स्कैनिंग एनर्जी इनसाइड द ब्लू ट्रायंगल। आपको बोलना है मैं ब्लू ट्रायंगल में जो ऊर्जा मैं स्कैन कर रहा हूं। पुट इंटेंशन। ओके, सो प्रे, से लॉर्ड गॉड, thank you for blessing my house with divine light, divine love, divine power. Thank you for blessing my house with divine guidance, divine health, divine protection, with divine light, love, and power. So be. Thank you. Clear? Now, scan the spiritual cord of the house, spiritual cord of your house. Scan. And then you scan 5 minutes before. Spiritual cord of the house, 5 minutes before. Right now, scan spiritual cord of my house. Then you intend spiritual cord of my house 5 minutes back. 5 minutes पहले. Did you see the difference? Yes. So thoughts, emotions. Clear? Okay. Next. Now project blue pranic energy. Blue. Very good. Now put intention with the help and blessing of God, with the help and blessing of my spiritual teacher, Sadguru Master Joa Proxy, Lord Mahaguruji Mealing, all the great ones, all the holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, and spiritual elders present. I hereby will and decree that any kind of negative thoughts, negative emotions, negative feelings, negative pattern and program, psychic energies within my workplace, if you are doing job, within your cabin, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके कैबिन से, within my workplace. So if you have a shop, factory, your own, just say that, your cabin, let all these energies are disintegrated completely, get extracted completely, get externalized and concretized into the blue triangle. सारी बाधारूप ऊर्जा, नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं, पैटर्न एंड प्रोग्राम मेरे काम के जगह से energy freeze, do not move, stay there. Cut the link, cut. Scan. I am scanning energy inside the blue triangle. Blue triangle में जो ऊर्जा मैं स्कैन कर रहा हूं. Sacrifice. Supreme God, Solar God, I fully sacrifice to you the contents of the blue triangle. Please accept this offering. Please burn the contents of the blue triangle. Thank you for accepting. Thank you for burning. हे सूर्यदेव, ब्लू ट्रायंगल में जो ऊर्जा है मैं आपको अर्पण कर रहा हूं, इसका स्वीकार कीजिए और इसको जला दीजिए। इसको स्वीकारने और जलाने बदल आपका खूब आभार। थैंक यू। रिस्क क्या? Okay. Ask for the blessing. Lord, thank you for blessing my workplace with divine light, divine love, divine power. Thank you for blessing my workplace with prosperity, abundance, and success. Thank you. Okay. Now, similarly, for your project or whatever you have targeted, for example, you want to go on holidays. आपको holiday पे जाना है. So you can say that let all the obstructing energies, negative thoughts, emotions, be disintegrated out. Preventing us to have preventing us to get a nice holiday weekend or whatever. So you can even remove the negative energy from your project. Suppose if you are doing some project or you want to
let's say you want your son to get admission in so and so college, so and so school. So you say all obstructing energies disintegrated, externalized into a blue triangle. So all these energies preventing your son to get admission in so and so college, admission in so and so school, or daughter, whoever is it. Are you getting my point? So that energy is to be out. Clear? Okay, so let's do one. You decide what you want to do. Okay, prayer will be common. Okay, blue, first blue. Blue. Very good. Let's do the prayer. With the help and blessing of God, with the help and blessing of my spiritual teachers, Sadhguru Master Jock Boxy, Lord Mahaprabhuji Mailing, all the great kid ones, all the holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, and spiritual elders blessing, I hereby will and decree that any kind of negative thoughts, negative emotions, negative feelings, pattern or program, all psychic energies preventing, now you put the sentence in your mind. अब आप अपने माइंड में सेंटेंस रखो कि कोई भी नकारात्मक विचार, भावनाएं, नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बाधा रूप ऊर्जा जो मुझे ये प्राप्त करने में बाधा रूप है, ये संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाए. Let all these energies be disintegrated completely, get extracted completely, get externalized and concretized into the blue triangle. Now. Energy freeze, do not move, stay there. Cut. Look at the blue triangle, scan. I am scanning energy inside the sacrifice, Supreme God, Solar God. I fully sacrifice you the contents of the blue triangle. Please accept this offering. Please burn the contents of the blue triangle. Thank you for accepting. Thank you for burning. हे सूर्य देव, ब्लू ट्रायंगल में जो ऊर्जा है मैं आपको अर्पण कर रहा हूं, इसका स्वीकार कीजिए और इसको जला दीजिए. इसको स्वीकारने और जलाने बदल आपका खूब खूब आभार. थैंक यू. Rescan. Ask for the blessing. Lord, thank you for blessing this project or whatever you want. Just put in your mind, जो भी आप प्रोजेक्ट के लिए आशीर्वाद ले रहे हो या कोई भी अपना काम पूर्ण करने के लिए. So just put in your mind, अपने माइंड में उस चीज को दोहराओ. ये God, thank you for blessing me with divine light, love and power. Thank you for blessing me with super success. Thank you. Open your eyes. Clear? So my dear friend, on a daily basis, you remove obstructing, disturbing thoughts. जो आपको रोज बरोज की जिंदगी में जो डिस्टर्ब, उसको निकालो. ये नेक्स्ट, यू रिमूव नेगेटिव एनर्जी विद इन योर हाउस. नेक्स्ट, यू रिमूव नेगेटिव एनर्जी विद इन द वर्क प्लेस, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन, आप ऑलरेडी उसमें काम कर रहे हो. So when you need that sterile atmosphere to have a, it's like you need a clean window to have the nice view. आपको क्लीन विंडो चाहिए, तो आप बाहर जब खिड़की के बाहर झांकोगे तो आपको नाइस व्यू दिखेगा. The same way you need to have a clear view so that you know that what to do in my project, what to do in my business, what to do in my job. Clear? Shavi ji, bolo. आत्मा नमस्ते सर. आत्मा नमस्ते. सर ये पूछना था कि ये वाली जो टेक्निक अभी आपने बताई है, ये हम हमारे क्लाइंट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं क्या? यस, करेक्ट, कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सर. वेलकम. दिव्या. आत्मा नमस्ते सर. आत्मा नमस्ते. सर, जो आपने एक टेक्निक कराया था अभी कि मतलब नेगेटिव थॉट जैसे आता है कि भाई मैं इस काबिल नहीं हूँ, उसमें कई बार होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि मतलब हम रुक क्यों रहे हैं, तो वो भी हमारा निकल जाएगा इसके अंदर. Yes. You can say na. You can add that regardless of the capacity of my brain to understand that what is wrong within me, कि मेरा कौन सा तरीका गलत है. अगर मैं वो, remember in Master said, regardless of the capacity of my brain to understand and the soul to register that I have this, like that. So कभी कभी कुछ चीज हमारा ब्रेन रजिस्टर या समझ नहीं पाता है. So even you can say, because God, whatever is negative within you, you know that what is wrong. Higher soul आपको पता है, तो you take it out like that. थैंक यू सर. Welcome. Toral way.
आत्मा नमस्ते सर। आत्मा नमस्ते। सर आई वांटेड टू आस्क कि अभी जो हम से फॉर एग्जांपल ये आश्रम प्रोजेक्ट के लिए कर रहे थे। हेलो, अनम्यूट। आत्मा नमस्ते सर। ये सर फॉर एग्जांपल अभी हम जो आश्रम प्रोजेक्ट के लिए जो ब्लू ट्रायंगल कर रहे थे सब निकालने के लिए आश्रम प्रोजेक्ट से, तो वहाँ दैट टाइम तो वी वर डूइंग लाइक दिस ओनली कि ऐसे करना है। no. Suppose if you are removing from system, अपने system से, तो then you do this. When नहीं, you अभी जो अपना आश्रम प्रोजेक्ट का चल रहा था ना, तो आई वॉज ज्वाइनिंग इट, तो मैं वो समझना चाहती हूँ कि वॉज आई डूइंग मिस्टेक या yes, फिर ऐसे करना है। yes, you don't need to do like this. Why you want to take from yourself? आपके हाँ अंदर तो हाँ तो पूरा टाइम आई वॉज डूइंग दिस बिफोर, तो मेरा तो कब से बंद हो गया बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यू, यू नो इट। तो yeah, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मैं ये कर रही थी तो आई वाज डूइंग रॉन्ग। yeah, you shouldn't. अंडरस्टूड सर, थैंक यू सो मच सर। सुजाता चक्रवर्ती, yes, बोलिए। Atma Namaste, sir. Lot of gratitude. Sir, Welcome. yeah. How many times can we do this, sir, in a day? You can do once, because when you remove negative energy from the house, after that it is up to you what kind of thoughts, emotion you are releasing. You don't need to do twice, thrice. For others, if I want to do it for my daughter, You cannot do for their weaknesses. You can just remove negative energies negative. Okay. within the room or like that. But you cannot remove negative energies within them. It means you cannot do blue triangle on behalf of your family or anyone. Understood, sir. Okay. Yeah. But they are not living with me, but so I can do it for distance also, no, sir? For removing No, the. no. Means what I mean to say, Yeah. that suppose your daughter has a problem. Let's say he has anger issue. Okay. You cannot remove anger from your system, like thinking that Yeah. Okay. I'm saying you can remove negative energy within her premises, means within her room, or Okay. let's say uh, any kind of negative and obstructing energy is preventing my daughter to get admission in the school. So that energy is outside, not here. Okay. That I can do. Okay. Yeah. Thank you, sir. You cannot remove negative energy on behalf of what Shaviji was asking about her client, means के client के business premises से या client के project से negative energy, client के अंदर से नहीं. Okay. Okay, sir. Understood. That Okay. is meaning. Yeah. Okay. Thank you, sir. Yeah. God bless. So same with the relationship. For example, if you have a relationship problem with someone, so any kind of negative thoughts, emotion between me and that person, all this generated, disintegrate out. So just remember, between the project, between anything you want to materialize certain things, take it out inside. Clear? But you cannot do blue triangle on behalf of others, means you cannot take out the weakness from them. उनके अंदर का weakness या कमजोरी उनका कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए उनके business या उसके लिए कर सकते. Clear? नीतल सोनी. सर अभी जो आपने रिलेशन के लिए बताया तो उसमें तभी ये करेंगे तो There is a different thing. मेरा आपसे गड़बड़ हो रहा है तो ऐसे all negative thoughts, emotion between me, within me, preventing me to have peace and harmony between me and Nital Bell. But here what I am saying, आप मेरा और आपके बीच में मैंने बहुत सारे थॉट्स छोड़े हैं ना, आपने भी छोड़े हैं, फ्लोटिंग आउटसाइड. सो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट ऑल नेगेटिव थॉट्स, इमोशन पैटर्न प्रिवेंटिंग अस टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली, ये सारे नष्ट हो गए. तो आपने जो छोड़े मैंने भी छोड़े, उसको भी नष्ट करो. ओके. तो अभी वैसा ही आप समझो, आप केस लेके आए कि मेरा और मेरी ननद का ऐसा चल रहा है, तो मैं बोला कोई बात नहीं, मैं ब्लेस कर सकता हूँ, बट ये कर सकते हैं कि आपको मैं सलाह दे सकता हूँ कि आपके और आपके ननद के बीच में ये थॉट इमोशन जो गड़बड़ वाले हैं ना, उसको निकाल के फेंक दो. दैट यू कैन डू इट लाइक दैट. और या तो मैं भी आपके बिहाफ पे कर सकता हूँ कि भाई आपके दोनों के बीच में गड़बड़ जो रहा है ना, वो सारे थॉट्स इसमें है. तो तभी ये फिंगर रखने की जरूरत नहीं है. क्लियर? तो वो तो हम किसी और के लिए भी कर सकते हैं, राइट? या आप उस वीकनेस के लिए नहीं कर सकते. ओके. अनम्यूट. Atma Namaste, sir. आपका Sir, when we are doing for other people, blue triangle contaminate होगा क्या sir? ब्लू ट्रायंगल पे सैक्रिफाइस करेगा तो क्या होगा? नहीं
हाँ, There is nothing harm, right, sir? We don't need to clean or anything. No other procedure. Okay, sir. Thank you. welcome. Clear? Gunjan ji, yes. Sorry, unmute. Okay. Sir, so I have a question that if there is like somebody's court case which is unjust, and I'm trying to, Anything. See, to anything uh, for anyone which is outside, not inside. In short, I cannot take out anything from your chakra, anything from your organ. But I can take out, I can pray and disintegrate the energy within your house, within your project, anything outside you can do for others. Anything. It includes anything. sir, what would the word? Okay, just help me here. What would the words be like? That too, I you have would to be. frame na. You understand English? You understand Kutchi? What is Gujarati? that? Hindi? No, no. Whichever language you want to, you can put your mind in tension. You don't need to have the problem. The problem is what, sometimes the problem with us, all the student would be, I don't know how to frame it. Why we want to frame it in first place? जो अंदर है दिमाग में निकाल दो फटाक. अरे वो गलत हो तो ऐसा थोड़ी है गलत निकलेगा. You can just put intention. ये मेरे और मेरा ये इन व्यक्ति के साथ जो कोर्ट केस चल रहा है उसमें सारे नेगेटिव थॉट इमोशन बाधा रूप जो भी ऑब्स्ट्रक्टिंग एनर्जी है जो मुझे और इस व्यक्ति को सुलह करने में बाधा रूप है सब दिन नष्ट हो जाए. अभी जो भी आप फाड़ के फेंको उस पर. तो वो मेरा नहीं हुआ तो just somebody else's. Then just I can still do it. Simple. Okay. 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 Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thorough business. Sir, super grateful, sir. This is so much big eye-opening for me, and like I was doing such a big mistake doing. I don't want to go into detail what time lag jayega, but sir, it was like super grateful, sir, for teaching the right thing. जय जन्माष्टमी. Jai Janmashtami, sir. Thank you, sir. Welcome. Let's do the closing prayer. Put your hands on the heart chakra, Namaste Mudra, raising high above the crown to the Supreme God, to the Divine Father, to the Divine Mother. Thank you for your priceless blessings. Slightly lower to our beloved teacher, Grandmaster Chok Oksui, Lord Mahaguruji Mailing, all the great ones, all the holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, and spiritual elders. We thank you for your priceless blessings. With gratitude, respect, and love, I thank. Open your eyes with a smile. Atma Namaste. Wish you all happy time, lucky. Thank you for joining. Thank you.